what is the time required to open a preschool? People may have different notions about it. कुछ लोग को 6 महीने लग जाते हैं और कुछ लोग को साल भर भी लग जाता है. And I will say कि after you finalize the property और हमारी property एक बार ready to move in हो जाए, उसके बाद we take 30 to 45 days to set up a school. You will say कि sir, what do you need? Why you need 30 to 45 days? I'll tell you what is the process about it. एक बार प्रॉपर्टी फाइनलाइज हो जाती है, नॉर्मली लोग टोकन अमाउंट देते हैं. वी गाइड द पीपल कि उसकी लीज डीड होनी चाहिए, लीज एग्रीमेंट किस तरीके का होगा, उसका फॉर्मेट कैसे होगा, एंड व्हाट ऑल पैरामीटर्स या क्या क्लॉजेस में डलवाने हैं, एंड अ प्रॉपर लीज एग्रीमेंट एक्सिक्यूट होगा विच में टेक अराउंड 3-4 days, समथिंग लाइक दैट. लीज डीड होने के बाद देन वी से कि अब जो है आपका अगर प्रॉपर्टी रेडी है, वी विल अरेंज फॉर अ 3D आर्टिस्ट जो कि वहाँ पर आकर इंटीरियर्स करेगा या पेंटिंग्स करेगा टू मेक इट मोर डेकोरेटिव, कलरफुल एंड मोर अट्रैक्टिव. इंटीरियर्स में वी ऑल्सो लुक इनटू इट कि भाई वहाँ पे डिस्प्ले बोर्ड्स होने चाहिए. सो वी हैव अ टीम ऑफ कारपेंटर्स जो कि वहाँ पे आके डिस्प्ले बोर्ड्स इंस्टॉल करते हैं. Then we have a wooden furniture which is made as per the order, as per the requirement, designs and other things, which will take around 20 days or something after ordering to deliver. ठीक है, तो that takes time. Then there are some as per site we customize and make the things, चाहे वो stage हो जाए for the children या फिर even activity arcades हो जाए, small petrol pump, ice cream parlor or doll house or any other things, mini zoo या इस तरह की चीज़ें कोई भी होती हैं, तो वो they are made as per the site requirements and all those things, a ball pool और ये सारी चीज़ें. तो the carpenter takes around 15-20 days simultaneously. Then once he is done with it, then it is the toys orders जो हम करके रखते हैं within the first week only we finalize and give the toys order. तो वो toys आने में भी another 15-20 days it takes to be, मतलब वो साइट पे आ जाते हैं. then they are unpacked and installed, right? फिर उसके बाद meanwhile जो हमारा HR department है, these all things are done by the procurement department. In the HR department they look into the recruitment of the staff. तो उससे पहले we give an advertisement in the local area, in the newspaper or online modes, and invite applications for the relevant post, and those applications are shortlisted, scrutinized. Then there are different rounds of interviews which are taken, so it also involves a written as well as a oral test and a demo, so as to finalize the best staff for the branch. फिर जब उनकी ब्रांच में स्टाफ फाइनलाइजेशन हो जाता है, उनका ट्रेनिंग्स आर देयर व्हिच आर कंडक्टेड. इट टेक्स अराउंड a week's time to train them up into various things. तो वो ट्रेनिंग भी साइमल्टेनियसली चलती रहती है. एंड ऑल्सो एक हमारा मार्केटिंग टीम है which makes a survey of the area to find out what is the prevalent fee structure which is going on in the nearby locality. तो वो हम check करके, and then we keep a fee structure of the branch. Also that fee structure depends on कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बड़ा हुआ है, कि बड़ा है, कितनी ब्रांच में क्या क्या फैसिलिटीज हैं, कितनी बड़ी ब्रांच है, प्लस पेइंग कैपेसिटी क्या है वहाँ पर जो लोग रहते हैं, वो हाउ मच फी दे कैन पे. So all these factors combined together we decide on the fee structure that needs to be kept at that location. उसके बाद जब once all these things are in place, once the staff is trained and once the toys, furniture, fixture, everything is there in the branch, there's some stock which needs to be procured and that needs to be given to the branch. There are some printing material which are customized as per the branch, given for printing, and they come over to the branch. So approximately a month's time goes in all these things, and then we meanwhile do the advertising and all those things for the branch. वो simultaneously वो शुरू हो जाती है, and then a good grand opening function is kept where branch opening takes place. So this is how the launching of the branch, and from beginning till the launching of the branch, the time
कंज्यूम्स और टाइम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, एंड एवरीथिंग इज ऑन अ वॉर फुटिंग सो दैट with a minimum time you can get the maximum benefits. Thank you.